नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आपका कोटक सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज एज यूजुअल कल की मार्केट स्ट्रेटेजी यानी कि सोमवार की मार्केट स्ट्रेटेजी आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। मंडे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मंडे के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। And we have to keep in mind that we cannot keep any specific view, especially when we are trading in this market. तो जब भी आपको इंट्राडे बेसिस पे अगर कुछ काम करना है तो मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ, और वो बहुत ही सिंपल है। इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए आपके पास रुख नहीं होना चाहिए। किस दिशा में मार्केट या किस दिशा में स्टॉक जाएगा उसके ऊपर आप ज़्यादा मत सोचिए। आपको ये सोचना है कि कौन से लेवल के ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए और कौन से लेवल के नीचे आपकी बिकवाली होनी चाहिए, कौन से लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, कौन से लेवल के ऊपर आपकी खरीदारी होगी, या तो अगर आपको अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो कौन से लेवल्स के नीचे आप शॉर्ट करोगे और कौन से लेवल का आप स्टॉप लॉस रखोगे। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जो व्यूज आ रहे थे उस व्यूज में देखा और किसी ने कहा था कि ये कल क्या होगा उसके बारे में नहीं बता रहा है, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मुझे यहाँ से प्रेडिक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रेडिक्शन जो होता है वो लेवल बेस्ड ही होता है, और लेवल्स जैसे वर्क करेंगे वैसे अगर आप आपकी स्ट्रैटेजी को बनाते हो तो मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर इंट्राडे स्ट्रैटेजी में काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल सकता है। तो जब तक मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं तब तक आप बिना भूले प्लीज सब्सक्राइबर बटन पे क्लिक कीजिए, सो दैट ये जो मैं अपडेट्स आप लोगों के लिए बना रहा हूं वो अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। साथ ही साथ देखिए, मैं इस अपडेट में कुछ सेक्टर्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, और जब भी मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर, ये पर्टिकुलर XYZ सेक्टर में एक्टिविटी हो सकती है, मैं डेफिनेटली उस सेक्टर को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी का ट्रेंड, बैंक निफ्टी का ट्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमें समझने के लिए। एंड बेस्ड ऑन दैट हम जहाँ पे भी मोमेंटम होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर को उस पर्टिकुलर दिन हम चूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग एनी शॉर्ट टर्म ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर और इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। So today we are going to design strategy for Monday. Okay, so just let me share the screen, my deck, and you will come to know that why I am specifically designing strategy for Monday in advance. I have to remove this few extra trend lines so that it will be much easier for all of you to understand the chart very clearly and properly. Okay, so this one is the entire technical pattern of last 1 month. Since you can see here 14th of 12th of May, now it is what, 20th of June, the market is in the same range. It is not crossing its previous high, it is not breaking its previous low. It's a little bit rising channel for the market, that is what I can say. And whenever there is a rising channel sort of consolidation, most of the time it favors bulls. That's my experience. Whether this will perform or not, I have to see. I have to rely on levels. एंड अगर मैं इस फॉर्मेशन को देखता हूं तो मुझे यही लग रहा है कि इस फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे बनाने की है। हम क्या करेंगे कि लेट्स से बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अप मूव, मंडे अगर मार्केट ऊपर खुलता है विद अ गैप, और अगर हम 25,250 के अराउंड अगर ओपन होते हैं, विच इज द हाईएस्ट upper boundary of this range. So in case if we see the market is opening somewhere close to 25,250 levels, 200 250,
then there we should look for taking profit on long positions instead of creating long positions at the highest point of the range. Clear? But because of any reason, market opens lower, and if it starts sustaining above the levels of 24,900 and 950, then in that case, we should look for taking contra bit of going long with a stop loss at 24,700. So why 24,900? Because 24,900 and 950 is the 50% area of today's entire range. So 24,950 is the major level, 24,900 is the psychological level. सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे वीडियो में ये कवर करने की कोशिश करता हूँ कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो हमेशा 24,700, 800, 900, 25,000 ये राउंड नंबर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है एज कंपेयर टू 24,950, 25,050 या 24,850. तो ये जो 50 पॉइंट्स का जो बीच में गैप होता है उसे हमें काफ़ी टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है. लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जैसे कि 24,900 की अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर 24,950 से लेकर 24,900 के रेंज में अगर मार्केट आता है तो उन लेवल्स पे डेफिनेटली आप कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हो. आपका स्टॉप लॉस होगा 24,700 का. क्यों? क्योंकि 24,700 ये इस पर्टिकुलर रैली का एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट था. कल के दिन में हमने देखा कि कैसे मार्केट ने पेशेंस रखने के बाद ट्रेडर्स को एक अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल दिया था. एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में काफ़ी बिलीव करता हूँ कि धीरज का फल मीठा होता है. पेशेंस बेयर्स स्वीट फ्रूट. हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. अगर मार्केट हमें बोल रहा है कि आप पेशेंस रखो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद का ट्रेड काफ़ी बड़ा होता है. कल के दिन में हमने देखा कि ये मार्केट एक नैरो रेंज में जाके बंद हुआ था. और ये नैरो रेंज क्या थी? ये नैरो रेंज थी विद इन दी नैरो रेंज ऑफ द प्रीवियस डे, जो इस रेंज को काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था. और जब भी हम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन वाले रेंज देखते हैं उसके नेक्स्ट डे हमें जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि 24,900, 25,000 ये एक रेंज है और 25,000 के ऊपर तो साइकोलॉजिकल लेवल भी क्रॉस हो जाएगा. उसके बाद डेफिनेटली आप मार्केट में एंटर कर सकते हो विद अ सर्टेन स्टॉप लॉस. एंड टुडे एग्जैक्टली वी सॉ दी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. नाउ फॉर टुमारो, in case if it opens at 25,250, there we should look for taking profit on long position. In case market opens or comes back to the levels of 24,950, 900, there we should look for taking long bait with a stop loss at 24,700. But in case in the next week market breaks the level of 24,700, then in that case we don't have any choice but to go short with a target at 24,500 and 24,350 in the worst case scenario. On the contrary, in case market crosses 25,250 and if it closes above the same, then the chances of hitting 25,650 or 750 would turn bright. Why? Because in the past, if you see, when the market was falling, that time the market has left a bearish gap between these levels, between 24,650 and 750. So the market may even fill this gap. Also, if we consider the entire range, then this range is between 750 points, and crossing 25,250 will in fact trigger the levels of 26,000 in the future. That's my view. But for the time being, I'm very much careful because again, I am at the upper boundary, and whenever we are at the upper boundary of the trading range, we need to be extra cautious in this market. Okay. Again, for the bank nifty, there also we feel that
the Bank Nifty has broken its important level of 56,100, which is positive. Yesterday on Bank Nifty also we discussed, we spent some time and we understood that the Bank Nifty has contracted its range. ये एक रेंज के अंदर था, प्रीवियस डे की जो एंटायर रेंज थी उस रेंज के अंदर की रेंज थी, जिसे हम एक बुलिश फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं। और आज के हाइस के ऊपर यानी कि 56,000 55,900 के ऊपर यानी कि कल के जो हाईएस्ट पॉइंट्स थे उसके ऊपर हमने बैंक निफ्टी में और भी तेजी आते हुए देखी। 56,100 के ऊपर की क्लोजिंग आना ये एक बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि क्लोज टू 56,800, 56,700 levels, we need to be careful because again, the Bank Nifty will come to those area where the Bank Nifty has found severe selling pressure. So close to 56,800, 56,700, we need to be careful while taking any long positions. Let the Bank Nifty cross its previous high of 57,100 levels. Then only we should look for taking some position. Now, while looking at the entire structure of the market, again we saw buying interest in consumer discretionaries. We also saw buying interest in real estate stocks and auto stocks. So from the auto space, if we consider any stock, then in that case you can see we saw buying interest in Mahindra and Mahindra. And this stock was little bit on the higher side. But if we consider few more stocks, then in that specifically, I would like to cover Reliance Industries. Here, the stock has formed ascending triangle, or I can say bullish pennant sort of formation at the top of the rally. After rallying to the extreme level, we saw Reliance has been consolidating and it has spent a lot of time within this range. But today, eventually, the stock has broken its barrier at 1465, 1470. So, crossing this level is certainly positive. We need opening above these levels to perform further. And if it remains higher, if it remains above 1470, then the next level to watch out for would be the gap of the entire, I'm going to say the breadth, the entire range of this particular triangle, which is close to 75 rupees. So crossing this level is something positive. Above 1470, we can expect close to 1550 sort of levels, which will take some time. I'm not saying that this will come in a very short term, but certainly we should look for considering this stock as a bullish stock. Apart from that, I would like to cover DMart. There, the stock is under the process of forming cup with handle formation, which is positive. Based on this, gradually we can expect 4550 and crossing decisively the level of 4550 will help the stock to move towards its previous high of 5500 or 5400. But these are all just a view that we are sharing with you. It's not a recommendation. Please use your own analysis or sources or research for acting on this particular levels. That's all from my side for the day. Thank you very much for listening me, watching this video. If you like, please share with your friends, your relatives, those who are interested or taking interest in the market. Please post your comments. That will really help me to improve on my side. Thanks one again. Have a lovely evening and nice weekend to all of you.